Hi friends, I Sunil Gupta welcome you at the platform of Edukemy, the platform that has to provide digital learning for the civil services aspirant. Friend, I am going to just continue the series of public administration. Under this, I would like to share some of the important topic, relevant topic related to public administration. तो आइए इसी के context में the one of the most important topic that is very relevant for the examination, what is called constitutionalism, यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? सो आज हम लोग जो डिस्कस करने का टॉपिक लिया हुआ है हमने, दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया and this is the challenges, because this is a very comprehensive topic. It is not possible for me to just see each and everything about the constitutionalism in very short video, and so I am just taking here the challenges related to constitutionalism, right? First of all, try to understand what is the meaning of constitutionalism, right? तो constitutionalism तो सब लोगों ने सुना होगा, तो what is the meaning? Simply try to understand here कि जहां पर रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिस स्टेट में रेगुलेट होता है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स इन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द गवर्नेंस. जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हर एक अथॉरिटी का दायरा फिक्स करता है कि अगर यहाँ पर लेजिस्लेचर है, दिस इज द एग्जीक्यूटिव, दिस इज ऑटोमेटिकली जुडिशियरी, दिस इज द पीपल. देन यहाँ पर एक कहता है कि इतने दायरा में लेजिस्लेचर होंगे, इतने दायरे में एग्जीक्यूटिव होंगे, दिस इज द जुरिसडिक्शन ऑफ द जुडिशियरी. If you surpass the jurisdiction, then judiciary will counter you. If this particular person has to surpass, then either legislature or the judiciary will counter you. इसको हम लोग कहते हैं द फिलोसफी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. तो जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है वहां पर देखो दो तीन चीज साथ में एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज द रूल ऑफ लॉ. रूल का हमेशा सुप्रीमेसी होता है, लॉ का हमेशा सुप्रीमेसी होता है यहाँ पे. सेकंड इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. Constitution is getting supreme over the other laws are there. And third important, it has to maintain checks and balances among the organs of the state. Legislature, executive and judiciary checks and balances के अंदर काम करते हैं, right? So this is the constitutionalism. India is also going to follow constitutionalism. यहाँ पे constitutionalism हमारे यहाँ है, but constitutionalism what has been accepted by our constituent assembly got challenges. तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इन्फोर्स कब किया था? 1950 में, राइट? एंड नाउ दिस टाइम 2021 71 इयर्स हैव बीन टेकन प्लेस. और इस 71 इयर्स में काफी चैलेंजेस हमारे सामने आए. तो और हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या चैलेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के सामने आए, एंड हम रिफॉर्म कैसे करेंगे ये हम लोग भी डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, सो लेट अस ऑटोमेटिकली सी दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि सबसे बड़ा जो चैलेंज किया, दिस इज कॉल्ड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर. ग्लोबल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि डेट इज कि एलपीजी का रिजिम हमारे पास में आया 1991 में. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एक्सेप्टेड द रिजिम ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर. था तो रिजिम, लेकिन इसके आते ही कुछ इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए चैलेंजेस क्रिएट कर गया, राइट? फर्स्ट, वी एक्सेप्टेड डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. अभी भी चल रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी है. यहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट हमने बनाया, दीपम. दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट. अब देखो, इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में करते हैं तो मैक्सिमम रिसोर्सेज स्टेट के हाथ में होता है. दैट इज एश्योर्ड अंडर आर्टिकल 39 एंड 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये कहता है कि रिसोर्सेज किसके हाथ में होने चाहिए? स्टेट के हाथ में. लेकिन हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, देन हमारा रिसोर्सेज फ्यू हैंड्स के हाथ में चला जाएगा. एंड इट चैलेंज्ड सोशलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कहीं ना कहीं पे एलपीजी आकर के एक सोशलिस्टिक कैरेक्टर को चैलेंज किया. आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 को चैलेंज किया, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हमने मार्केट को एक्सेप्ट कर लिया. मार्केट एक्सेप्ट किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है. मार्केट को हमने अहमियत दे दिया, इतने ज्यादा हमने अहमियत दे दिया मार्केट को कि वेलफेयरिस्टिक प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए. और जब वेलफेयरिस्टिक प्रोजेक्ट जब कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, लेबर लेजिस्लेशन तक के हमने रिफॉर्म कर दिया. इसका मतलब वर्क कल्चर हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन वर्कर कल्चर.
It is also against socialistic character of the Constitution of India. And third important is said to be this state. हम लोग के सोशलिज्म में या फिर आर्टिकल 39 क्लॉज बी कहता है कि ऑनरशिप रिसोर्सेज का स्टेट का होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है कि डायनामिज्म ऑफ द मार्केट फोर्स हैज लेड टू स्टेट रोल ऑफ स्टेट सेट टू बी द वेरी मिनिमम एज पॉसिबल. स्टेट मिनिमलिज्म जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ पर कंटिन्यू कर गया. The state has become a part of the facilitator, rather than controller. But state role is very less. State interventionism is being compromised. It means it is against the socialism. तो कहीं ना कहीं पे सोशलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सोशलिस्टिक टर्म जो प्रीएम्बल में है या फिर आर्टिकल 38 एंड आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज गेटिंग चैलेंज्ड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द एलपीजी रिजिम, इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर at the global level, right? ये तो first important factor था. Second factor is also related to the cooperative federalism, right? तो cooperative federalism is the second important factor. देखो जब हमने constitution को accept किया, then constitution उस समय was based upon a strong center approach. State is getting more and more power, less power, and center is getting more and more power, right? ऐसे में देखो कुछ कुछ आर्टिकल हमने इलॉजिकली बना रखा था, जैसे आर्टिकल 356. Article 356 intentionally has become very flexible article, although this is a part of the emergency situation. Article 155, that is the appointment of governor on pleasure, removal of governor on pleasure, right? Article 312 related to all India services जो डोमिनेट करता है स्टेट पे. अभी तुमने देखा ऑल इंडिया सर्विसेज का डोमिनेशन है कि ममता बनर्जी चीफ सेक्रेटरी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैट्रिक्स हैज टू कम अंडर द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. एंड आर्टिकल 239 that is related to borrowing restriction upon the state. तो based upon this, जैसे ही हमने cooperative federalism का concept लिया, after 1980 this has been accepted in spirit, and then these articles came under the challenge. So this is the important, second important challenges are there. Third जो challenges हमें देखने को मिला वो 1970 के बाद में है. This is related to prime ministerial form of governance. तो parliamentary form में क्या करते हैं ना कि पूरे कैबिनेट मिल करके डिसीजन लेते हैं, but parliamentary form में prime minister himself or herself has to take the decision without consent of the cabinet colleagues. ये जो परंपरा है, जो tradition है, that is going to start from the Indira Gandhi regime and is still going to continue. Even PV Narasimha Rao in the coalition government continued. Atal Bihari Vajpayee ji continued. Even the Modi government now this time is going to continue. तो इसने एक important characteristics को जो challenge किया है, that is called the Article 74 clause 1, जिसमें ये कहता है there shall be Council of Minister, to take the decision. Council of Minister is de facto executive. यहाँ Council of Minister de facto executive नहीं है. Prime Minister has become the de facto executive. तो automatically prime ministerial democracy replaced the parliamentary democracy, that is the basic structure of the constitution. ये challenge है, right? कुछ challenge तो हमारे supremacy of parliament को लेकर के भी है. हमारे constitutional maker ने supremacy of parliament को accept किया. Parliament has been created the house of the supreme utmost house for the democracy. काफी powers हमने दिए, but institutional problems have to come even in the parliament, and that undermines the concept here. First important, politicization of traditional variables. अब पार्लियामेंट में नेशनलिस्ट ओरिएंटेशन के लोग नहीं पहुंचने लगे, बिकॉज यहाँ पर ट्रेडिशनल वेरिएबल्स का पॉलिटिसाइजेशन हो गया. दैट पॉलिटिसाइजेशन बेस्ड अपॉन कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेजेस. एक कास्ट का लीडर हो गया, तो कास्ट का लीडर हैज टू कम इन पार्लियामेंट. दे आर गोइंग टू डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर कास्ट. Reservation is not important. Important is what? The reservation of particular caste. Although the caste is already not deserving to get the reservation. The reservation as an issue of national importance is not important. Important is that is the caste. That is the caste distinction is important. Same thing we have seen. Religion. तो एक आदमी ने सिर्फ particular religion के लिए सोचा. तो based upon that, our जो nationalistic value था parliament का, that is converted into parochialism and challenge the constitutional feature of the unity and integrity of the nation. Next, criminalization of politics. देखो criminalization of politics भी एक issue आया जिसमें कि criminal joined the politics and has taken the authority in the state. अब law breakers have become the lawmakers. जाहिर है कि they are going to making the law in very non-accountable manner, and so automatically challenged
the spirit of the Constitution of India. Ineffective control of the parliament came into being. उसके पीछे हमने देखा दो important reason. First important, lack of constructive opposition, and second important, journalistic nature of parliament. तो पार्लियामेंट का जर्नलिस्टिक नेचर आया एंड वी हैव एक्सेप्टेड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को अब ये पार्लियामेंट कोप नहीं करता है, कैपेबल नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग इज वेरी लेस for this particular purpose, and constructive opposition is not able to maintain accountability in public governance. So automatically accountability and the progress oriented administration and the governance जो हमारा future था, it is getting challenged. And next important, loss of parliamentary ethics. पार्लियामेंट्री एथिक्स अपने आप में लॉस कर गया. हमने देखा कि देयर वाज पार्लियामेंट्री करप्शन. इवन झारखंड मुक्ति मोर्चा केस इज कंसर्न इन द 1993, दैट वाज द ब्राइबरी केस related to no confidence motion. We have seen, bribe for asking the question. We have seen many things, that is the defection politics in the our parliament. तो ये सब जितने भी घटना हुए, इवेंट्स हुए, ये सब हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, एथिकल वैल्यूज को डिग्रेड कर दिया. तो कुल मिलाकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने पार्लियामेंट पे भरोसा किया, पार्लियामेंट को एथिकल बनाया, पार्लियामेंट के ऊपर में हमने सुपीरियरिटी दिया, पार्लियामेंट को अथॉरिटी दिया, ऑल स्ट्रेटेजिक अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड इन द पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट इटसेल्फ हैज बिकम द इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉन अकाउंटेबिलिटी, क्रिमिनलाइजेशन एंड द पैरिकलिज्म. तो बेस्ड अपॉन दैट सो मेनी चैलेंजेस केम इनटू बीइंग. तो कुल मिला के हम कहेंगे कि our constitutionalism got challenges from the different sector, different quarters, right? So based upon that, this is the challenges before constitutionalism. In the next slide, यानी कि next video में हम देखेंगे कि अगर ये challenges है तो how can you make the reforms? Whether reforms in parliament is sufficient in order to cope the challenges, or reforms in the constitution itself required in order to adapt the situation. तो इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस. थैंक यू वेरी मच.